Ready for medical career growth? Yes, you are in the right place. Hello, this is Dr. Neema Bish, BDS by degree and a pharma professional. As a founder of Career in Pharma, our mission is to guide medical professionals towards remarkable success in the pharma industry. With a track record of over 700 plus students trained and placed into various premier pharma companies, we are here to elevate your journey. Hello everyone. Once again, I welcome you all to Career in Pharma. Now in today's video, we are going to talk about medical coding. So before I talk about medical coding in detail, where you will understand whether it is for you or not, if it's for you, how you can pursue your career growth opportunities, all the things I'm going to mention in this video today itself. So before I start, let me tell you, we have started with a new series. That is our series on the answers, the videos which we are making with the help of the comments which we are getting. So whatever queries, doubts, video suggestion we get through our audience followers, we have started making videos on those topic, and this is the series of those topic only, and this is the first episode of answering questions, comments, and making videos based on suggestion from our viewers. So let's begin. Now, like I said, today I'm going to explain about medical coding end to end. You will get all the clarity, and for that, let me share my screen because I have prepared slides for the same. Let me tell you, from today's video, like I already said, you will get end-to-end clarity. So in today's video, we are going to talk about what you will learn. I will tell you what exactly is medical coding, why medical coding is required, why there is a need of medical coding, means a medical coding कर क्यों रहे हैं. So that I'm going to explain you. Then what is the importance of medical coder? मीन्स मेडिकल कोडिंग करके आप अगर मेडिकल कोडर बन जाते हैं तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है. देन स्कोप ऑफ मेडिकल कोडिंग, व्हाई टू लुक फॉर मेडिकल कोडिंग करियर. क्या ऐसा है मेडिकल कोडिंग करियर में दैट यू शुड लुक फॉर जॉब, यू शुड लुक फॉर करियर इनटू दिस फील्ड. देन यू विल लर्न व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज इन मेडिकल कोडिंग. Then where to look for job and criteria for job. What is a certified coder? What are the different specialities in medical coding? And last but not the least is career growth opportunities inside medical coding. So these many topics we are going to discuss through this video today. So let's begin. Yes. So first question is, what is medical coding? Now in my previous video, I already shared the difference between the pharma coding and the medical coding. So let me tell you, medical coding is an entirely different entity. It has to do nothing with the coding which happens inside pharma industry. So inside pharma industry, the coding which we are doing is a very small part, but this medical coding is all about medical coding only. So this is totally different. Now, what is medical coding? Here we are using alphanumeric codes. So these are universal medical alphanumeric codes that we call as medical codes. So what we do, there is a transformation of healthcare diagnosis, procedure, medical services and equipments into universal medical alphanumeric codes, and these are known as medical codes. Yes. Now, from where we are taking the data, now the diagnosis and the procedure codes are taken from medical record documentation. So let me give you in a very simple way what happens. I mean, in the pharma medical coding also we use alphanumeric codes, but that is a very small part. But here it is all about coding where we are converting. So the patient data which is coming to us in medical coding, we have a report, let's say, where all the details of patient is there, means when the patient is hospitalized, what happened with the patient, what the diagnosis was, what procedure was performed in patient, what medical services the patient
took from the hospital, what all equipments used in that hospitalization, all the things we are getting in the reports, and to those diagnosis, procedure, medical services and equipments, we need to give universal codes. And in the next slide we will understand why we are doing it. So ठीक है, हमने कोड्स तो दे दिए, बट हम कोड्स दे क्यों रहे हैं? मेडिकल कोड्स, इन सारी चीजों को मेडिकल कोड्स में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है? So medical coding is actually a part of entire RCM cycle. So RCM cycle is nothing, it's a revenue cycle management. So जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, ठीक है, उसका कुछ प्रोसीजर होना होता है, व्हाटएवर, तो उसके सारे बिल्स होते हैं, राइट? सो वो होता है मेडिकल बिलिंग। वो मेडिकल बिलिंग फिर लेट्स से अगर वो पेशेंट मेडिकली इंश्योर्ड है किसी भी कंपनी के थ्रू, तो वो जो बिलिंग डिटेल्स हैं, बिलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जाती हैं मेडिकल कोडिंग टीम के पास। पहले वो जाएंगी मेडिकल इंश्योरेंस टीम के पास, सो दैट यू नो पेशेंट को पैसा मिल सके जो भी उसने ट्रीटमेंट लिया है। नाउ मेडिकल इंश्योरेंस टीम क्या करती है? दे विल give the data to the medical coders so that those medical coders can convert the required data into codes, and based on क्या कोड हमने उसको assign किया है, हर एक कोड का एक अमाउंट होता है, based on that patient medical insurance उसको मिलने वाला है कि नहीं, कितना पैसा मिलने वाला है, ये सब डिसाइड होता है। तो medical coding is a part of this RCM cycle and it helps to provide the proper reimbursement to the patient from the insurance company. Yes, and also not just medical insurance, it also helps for research purposes and basic medical record keeping for the patient. Okay, so medical coding एक small part है इस पूरी entire revenue cycle management का, जहाँ पे medical codes देना इसलिए जरूरी है because with the help of medical codes we can decide that patient को कितना पैसा मिलने वाला है और कितना पैसा लगने वाला है, और मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी कितना उसको दे सकती है, वो सारी चीजें डिसाइड होती हैं विद दिस मेडिकल कोडिंग, एंड दैट्स व्हाई मेडिकल कोडिंग इज रिक्वायर्ड। सो नाउ आई होप कि यू अंडरस्टूड, ये जो मेडिकल कोडिंग है ये पार्ट है पूरा इस आरसीएम का, जहाँ पे जब एक कोई पेशेंट है जिसने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो कभी भी पेशेंट को कुछ होता है तो कैसे डिसाइड होता है, कैसे ये डिसाइड किया जाता है कि भाई मतलब इस पेशेंट को जो भी मेडिकल इंश्योरेंस इसने लिया है इसमें कितना पैसा उसका लगेगा, कितना पैसा ये पेशेंट को मिल सकता है, वो सारा विद द हेल्प ऑफ मेडिकल कोडिंग डिसाइड होता है। सो दैट्स व्हाई मेडिकल कोडिंग इज रिक्वायर्ड। नाउ विल सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल कोडिंग। लाइक आई ऑलरेडी सेड, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट हेल्प्स इन एक्यूरेट बिलिंग। So it is important for proper billing and ensuring healthcare providers to receive appropriate compensation for the services rendered. So for accurate billing, setting is for data analysis. So coded medical data is valuable for healthcare analysis, epidemiological studies and public health research. Third is for better patient care. Yes, because it helps in preventing medical errors, ensures proper documentation of treatments and medications and ensure patient safety. Fourth is for clinical documentation improvement. So the coded data which we are doing with the help of medical coding, that coded data helps to understand medical history and provide appropriate treatment plans. Last is it also facilitates the reimbursement. So it facilitates reimbursement by ensuring that healthcare services are accurately documented and classified using standardized code sets. So this is the importance of medical coding and why we are doing this. Now we will understand what is the scope. So let me tell you, India is the second largest healthcare outsourcing destination and nearly 80% of the medical business procedure जो कि US में होते हैं are outsourced to our country. So 80% जो भी काम मेडिकल कोडिंग के अंदर आता है, इवन आई वुड से इवन इन फार्मा इंडस्ट्री जो भी काम आता है 80% काम तो बाहर से ही आ रहा है, मोस्टली यूएस, एंड सेम इज द केस फॉर मेडिकल कोडिंग ऑल्सो। सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन and nearly 80% of the medical business procedure in the US are outsourced to our country. Means जो डॉक्टर्स यूएस में हैं, जो पेशेंट्स यूएस में हैं, जिन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, जो डॉक्टर्स वैसे पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनका डेटा इंडिया आता है। Thus, medical coding is a career
that individual must choose due to its elevated demands and several occupations opportunities in healthcare institutions. So the medical records in health information technician field is in high demand, and as the demand for medical coder is 40% higher than the supply. So demand ज़्यादा है, supply कम है, definitely अच्छा scope है medical coding में. Now I would say why to look for medical coding. तो एक तो हमने बात करी कि भाई डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है. उसके अलावा तो पहला पॉइंट तो वही है, डिमांड, देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर मेडिकल कोडर्स because of increased complexity of healthcare systems, because of increased aging population. Yes, अब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पैसे आ गए हैं, लोग अपना मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं. पहला वाला टाइम गया, मींस पहले तो केवल डेवलप्ड नेशंस में ही पेशेंट्स मेडिकल इंश्योरेंस लेते थे. आज की डेट में इंडिया में भी पेशेंट मेडिकल इंश्योरेंस ले रहा है क्योंकि एवरीवन इज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी. सो डिमांड इज ऑन अ हायर एंड and the healthcare system complexity has also increased. Second thing is why you should look for medical coding career is job stability. So medical coding offers you a stable job and a secure job, and as healthcare services are always in demand, right, regardless of economic fluctuation. So whatever the economic fluctuation, recession, saturation is there, patient तो बीमार हमेशा ही पड़ेगा, हमेशा ही उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, राइट? सो दैट्स व्हाई regardless of economic fluctuation, these healthcare services are always in demand. Third, why you should look is flexibility. So medical coding एक ऐसा फील्ड है जो आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं. सो रिमोट वर्किंग इज ऑल्सो कैन बी डन. इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क लोकेशन एंड आवर्स ऑल्सो बिकॉज इट्स अ डेस्क जॉब. आपको कोई लाइव पेशेंट नहीं देखना है. So it can be done from work, from home, and also there could be flexibility in working hours also. Another reason to look for medical coding career is career advancement. So medical coding can serve as a stepping stone to other healthcare careers such as health information management or healthcare administration. You're going to get a competitive salary. So medical coders typically earn competitive salaries with opportunities for advancement and specialization. नाउ जब हम कॉम्पिटिटिव सैलरी की बात कर रहे हैं तो मैं फ्रेशर लेवल पे बता दूं, इफ यू आर अ फ्रेशर, सो मेडिकल कोडिंग की जो फ्रेशर जॉब पे जो सैलरी है दैट इज बिटवीन 20 to 30,000. तो ये इससे कम भी हो सकती है. 20 to 30,000 में सर्टिफाइड मेडिकल कोडर्स के लिए बोल रही हूँ. अगर इफ यू आर नॉट अ सर्टिफाइड मेडिकल कोडर और आप डायरेक्टली मेडिकल कोडिंग इंडस्ट्री में जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो आपको 12-15 हजार में भी काम करना पड़ सकता है. बट इफ यू आर अ सर्टिफाइड कोडर विद गुड नॉलेज ऑफ मेडिकल कोड्स, मेडिकल कोडिंग, गुड नॉलेज ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वेरी इजीली यू कैन अर्न बिटवीन 20 to 30,000. सो 20,000, 25,000, इवन 30,000 you can earn at a fresher level. Last is it's a very critical role. So medical coding जो role है, it's a very crucial and critical role, and it can often be contribute to healthcare done remotely. So definitely it's a critical role, crucial role जिसको हम avoid नहीं कर सकते हैं. So that's why you should look for medical coding career. Now let me tell you what are the companies in medical coding. See, there are n number of companies. So few famous one I have just shortlisted is Coro Health, Omega Healthcare, UHG, Episodes, GAPS, Access Healthcare, V Technologies, IKS Healthcare, Optum, and you can see there are many more in this image also, right? So these are the companies available in medical coding. Now, where to look for job and what is the criteria for job? So नौकरी इंडीड तो सबको पता है, जो कि मैं बार बार अपने वेबिनार्स में भी बोलती हूँ. उसके अलावा लिंक्डइन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, एंड इसके अलावा मेडिकल कोडिंग के लिए तो बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स भी हैं जो कि मेडिकल कोडिंग के ऊपर बात करते हैं और वहां से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी पता चल जाती है. तो आप फेसबुक ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम लिंक्डइन, नौकरी एंड इंडीड. नाउ इफ आई टॉक अबाउट क्राइटेरिया वाइज कोई ऐसा फिक्स क्वालिफिकेशन नहीं है जिसके थ्रू आप मेडिकल कोडर बन सकते हैं. मींस अगर आप एक बीए हैं तो भी आप मेडिकल कोडर बन सकते हैं. इफ यू आर अ बीकॉम देन आल्सो यू कैन बिकम अ मेडिकल कोडर. इफ यू आर अ लाइफ साइंस ग्रेजुएट देन आल्सो, एंड इफ यू आर अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, फार्मा ग्रेजुएट देन वेरी इजीली.
ना डिफरेंस क्या होता है, मेरी पिछली वीडियोस में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि डिफरेंस क्या होता है। अगर एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल मेडिकल कोडर बन रहा है और एक बीए वाला मेडिकल कोडर बन रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि सी पहला डिफरेंस तो ये है कि डेफिनेटली जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनको एनाटॉमी आती है, उनको फिजियोलॉजी आती है, बिकॉज उनके ग्रेजुएशन में ही वो ये चीजें पढ़ चुके हैं। तो डेफिनेटली जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है, जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है एनाटॉमी की फिजियोलॉजिकली, विल बी फार बेटर फॉर पीपल हु आर फ्रॉम healthcare background or pharma background. Let's say if you are a BDS, BAMS, BHMS, BSMS and BPT, okay, if you are a pharmacy graduate, definitely you will have a better understanding of anatomy and physiology, and because of this better understanding, definitely आपकी probability बहुत high है इंटरव्यू क्लियर करने की, and also एक सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है कोडिंग के लिए, वो क्लियर करने की। अदरवाइज आई हैव सीन पीपल हु आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, बीकॉम, जिन्होंने मेडिकल कोडिंग एग्जाम भी क्लियर करके नाउ दे आर वेरी वेल सेटल्ड इनटू देयर मेडिकल कोडिंग करियर आल्सो। ओके, सो टेक्निकली क्वालिफिकेशन वाइज तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट यस, if you are a healthcare professional, without doubt your understanding will be far better, and based on that your career progression will also be far better. Yes, now अभी मैं सर्टिफाइड कोडर की बात कर रही थी। तो सर्टिफाइड कोडर क्या होती है, तो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका है कि सर्टिफाइड कोडर वर्सेस अनसर्टिफाइड कोडर। If you want to see in detail, you can check out that video where I have explained the difference between certified medical coder versus uncertified medical coder. यहाँ पे मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आप एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर हो जाते हैं, जो कि CPC जिसको हम बोलते हैं, इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड क्रेडेंशियल फॉर मेडिकल कोडर्स। अगेन आई एम सेइंग, आपको जॉब तो मिल जाएगी बिना सर्टिफाइड मेडिकल कोडर बने, बट योर करियर विल नॉट ग्रो। इफ यू रियली वांट टू ग्रो, यू नीड टू बिकम अ सर्टिफाइड कोडर, जिसके लिए एक एग्जाम लिखना पड़ता है, उस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है। सो अगेन आई एम सेइंग, जॉब तो आपकी लग जाएगी बिना मेडिकल कोडिंग सर्टिफिकेशन के भी, देन आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, आपका करियर ग्रोथ अच्छा नहीं रहेगा इफ यू आर नॉट अ सर्टिफाइड मेडिकल कोडर। And let me tell you, if you are a certified medical coder with good medical coding job experience, so GCC countries में, Gulf countries में, Middle East में भी बहुत अच्छी opportunities हैं, where there is a requirement of certified experienced medical coder. Yeah, so that is the meaning of certified coder. Yes. Now हम बात करेंगे different specialities क्या क्या होती है medical coding में. So this is very easy to understand. So like I said, मेडिकल कोडिंग क्या है? जहाँ पे पेशेंट मेडिकल इंश्योरेंस ले रहा है, हॉस्पिटल में आ रहा है, ट्रीटमेंट ले रहा है विद द हेल्प ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, राइट? एंड एट द बैक एंड, मेडिकल इंश्योरेंस टीम्स गोइंग टू गिव data to the medical coders, where medical coders going to convert the diagnosis, treatment procedure, everything into medical codes. So जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं किसी भी मेडिकल फील्ड में ट्रीटमेंट रिलेटेड, वहां पे उतने में आप मेडिकल कोडिंग की स्पेशलिटीज को भी डिवाइड कर सकते हो। तो जैसे वी हैव सर्टिफाइड कोडिंग एसोसिएट, सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर, सर्टिफाइड कोडिंग स्पेशलिस्ट, सर्टिफाइड कोडिंग स्पेशलिस्ट फिजिशियन बेस्ड, सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर, आउटपेशेंट कोडर। आउटपेशेंट कोडर मींस वेयर पेशेंट इज इन जस्ट ओपीडी, पेशेंट एडमिट नहीं हुआ है, आया चेकअप करवा के गया, उसके लिए भी कोड्स होते हैं। दूसरा है CIC, दैट इज इन पेशेंट कोडर, मींस जब पेशेंट इन पेशेंट IPD, इन पेशेंट डिपार्टमेंट का हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो उस केस में हमारे CII सर्टिफाइड इन पेशेंट कोडर्स की जरूरत होती है। देन रिस्क मेडिसिन कोडर, देन सर्जिकल सेंटर कोडर, देन एनेस्थीसिया पेन मैनेजमेंट कोडर। सो जो भी अपनी ट्रीटमेंट मोडालिटीज है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उनपे ये आप स्पेशलिटीज को भी डिवाइड कर सकते हो। तो कार्डियोलॉजी भी है, इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ूंगी। We have emergency, we have family practice coder, we have gastroenterology, general surgery, hematology, interventional radiology, then we have ophthalmology, pediatrics, orthopedic, obstetrics, gynecology, urology. Yes. अब बात करते हैं what are the different career growth in medical coding. So आप अगर अपना करियर मेडिकल कोडिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं फिर से कह रही हूँ, you can get a job even without becoming a certified coder. But agar you want to make a long term career into medical coding, please become a certified coder. जॉब ले लीजिए एंड जॉब के साथ
try to clear the exam, okay, and try to become a certified coder. तब तो आपकी ग्रोथ अच्छी है, अदरवाइज आपकी ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी, आपकी सैलरी भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, एंड बाहर की कंट्रीज के लिए तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इफ यू वांट टू वर्क इन मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज में, वहां तो सर्टिफाइड कोडर्स ही लेते हैं, उससे नीचे नहीं पूछा जाता है. तो ऑलवेज बेटर टू बिकम अ सर्टिफाइड मेडिकल कोडर. सो दिस इज द करियर ग्रोथ इन दिस, वेयर you can start as an intern, start with less salary, then you can become a junior medical coder, you can become a senior medical coder, you can become a quality analyst, then you can become a group coordinator, you can become a team leader, and you can become a manager. Yes, so this is the hierarchy, career growth in medical coding. इसके पैरेलली आप देख रहे हैं जूनियर मेडिकल कोडर के साथ बिलर्स एंड एआर कॉलर भी लगे हुए हैं. तो ये सब क्या है? ये तब है, लेट्स से यू आर नॉट अ सर्टिफाइड मेडिकल कोडर और आप इस आरसीएम रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट में एज अ मेडिकल बिलर जॉब ले लेते हैं, उसके बाद आप सर्टिफाइड कोडर बन के कोडिंग में स्विच कर सकते हैं. तो ये भी हो सकता है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द करियर ग्रोथ इन मेडिकल कोडिंग. सो आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी कि मेडिकल कोडिंग होता क्या है, क्यों करते हैं हम लोग, कहाँ पे यूज होता है, कैसे ये कोर्स होते हैं, क्या स्कोप है, क्या सैलरी है एट अ फ्रेशर लेवल पे, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन वाले इसको कर सकते हैं, एंड व्हाट इज द करियर ग्रोथ, एंड व्हाट आर द कंपनीज एंड वेयर टू गेट द जॉब अपडेट्स. यस, सो आई होप दिस वीडियो गेव यू क्लैरिटी, एंड टू एंड क्लैरिटी ऑन मेडिकल कोडिंग. इसके अलावा इफ यू वांट टू नो मोर, आई वुड सजेस्ट यू टू राइट अ मेल विथ योर क्वेरी whatever you have on medical coding, because we do take a regular masterclass on medical coding. We do conduct regular webinars on medical coding, which you can also join, and you through that you can clarify your further doubts, because that medical coding webinar which we do regularly, there we call experts. Experts means who are working in medical coding for more than 10 years and now they are expert into this field. Through those people you are going to get your query going to be clarified. Okay, so if you want to know more about medical coding apart from this video, please write a mail to connect@careerinpharma.com, where our team is going to help you with your further query, and you can join our masterclass also. Yes, so with this I'm going to conclude this video, and I hope you got end-to-end idea and clarity on medical coding. And if you really like this video, if you really like the content, please don't forget to like this video, don't forget to subscribe to our channel, and if you have any doubt regarding what I have discussed in this video, please comment below. Like I already said, we have started this series where we are handling just comments answer. We are just making videos on what our community suggesting us. Yes, what our followers suggesting us. So yeah, keep commenting, keep suggesting what next video you want, and we'll be coming soon with some fresh next video. Till the time I come again, till that time, please stay safe, aware, healthy, updated, and keep exploring new things. Have a nice day.